I'm collecting it around 10 dilutions and then including patent from one PHC and then CHC is later released. No, it's just not that. Not that. No, I have not. Yeah, yeah, it's the first one. Yeah. Okay. Good morning, ma'am. I'm Dr. Devavrat Das, MD. From 2007 to 11, looking after collaborative studies. So later on, I was in clinical research in Andhra Pradesh. So actually, when I was in Delhi, some of the UK people, top cancer biologists and immunogenetics, he was looking at homeopathy. He has prepared some of the RNA and DNA molecules on the basis of homeopathic way, 6C potencies. He was writing to our council. Though I was in head of the collaborative studies, but I could not convince anybody to accept their drugs into our pharmacopy. They have requested actually.
So later on, I have retired, madam. So one of the people in Andhra Pradesh, they have started this. They have collaborated with the Homeo Vitality UK company and India to bring those drugs to India. But still now, they could not succeed to bring those drugs. Now, I'm the technical advisor to that firm. Now, SSB Homeo Vitality India Co. in Andhra Pradesh. So they have started the company with the name of getting those drugs into India, which they cost 10,000, including every cost of that. They were patented in UK. But though government is supporting this much in India, they could not able to even hear a top man in allopathic side who is looking at homeopathy and asking, why do you do this simple? Yeah, definitely, definitely. Really, I feel when I look at your lecture, okay, okay. As an advisor, technical advisor. Okay. Good morning, ma'am. And in today's program, I am very much amazed to know that all of you are coming from very small state or union territory and which are not easily accessible to the central government, or we are not uh, doing so much interactions we don't have. So I find that people from Pondicherry, Andaman and Nicobar, Manipur, organization is the organization in India which gives approval for new drugs of the allopathic side, like vaccines and blood sera, all those things. The approval is given by the CDSCO headquarters in New Delhi. So right now, after Ministry of Ayush has visualized that there is a gap in the enforcement of Ayush drugs, so they have formed a Ayush vertical in the CDSCO, in which Ayush officers or who are conversant with the Ayush systems are posted in the CDSCO. So they are working together with the allopathy side for bringing about uniformity in the drug rules with respect to the Ayush drug. So we have one deputy drug controller Ayush and 4 assistant drug controller of each system. Only my post is been filled by me. Other rest of the 3 posts are vacant, and we have drug inspectors for central government
So there are 4 drug inspectors of each stream right now. So this is the Ayush vertical. So in short, now regarding homeopathy, since some of you people are from ASU background, so they won't be knowing about homeopathy since, but like Dr. Das has mentioned that they are also interested with testing of homeopathy drugs, and he is from Ayurveda, so he must have just basic concept about homeopathy. So homeopathy is an individualized method of drug therapy. Like all our other systems of ASU, they are also individualized, which we consider the holistic concept of disease and the holistic concept of the human being. So we don't uh, consider a system or a particular disease-oriented treatment, but as a whole, we treat the individual. So it is an individualized method of drug therapy. It is based on the principle of similia similibus curenta, like cues like. So the medicines whichever is being given are first tested on the healthy human being. Whatever symptoms are produced, those are recorded into a booklet, that is the materia medica. That forms the materia medica, where all the symptoms of that medicine is being recorded. And then when a patient comes and he deliberates his symptoms, those symptoms are matched with the symptoms available in the materia medica, and whichever medicine is best suitable or best matching is given. And so in this principle, that like cues like, similia similibus curenta is the principle of homeopathy. And here by giving the medicine, artificial disease is being created which overcomes the natural disease. So there is a very long philosophy about it. I'm just giving a brief one-liner for you. Now, the sources of homeopathic medicine. The sources of homeopathic medicines are basically plant herbal sources. Like in Ayurveda or Siddha or Unani, most of the are plant or herbal sources, 60% of them. Then we have the animal sources. We have the mineral sources. Then sarcodes. Sarcodes, this is a new concept for those who are from different systems. So sarcodes are healthy tissues are taken and the medicines are being produced. Then we have the nosode, in which disease tissue or disease secretions are being taken and then potentized and made into homeopathic medicine. Then there is imponderabilia, which is the energy sources or which cannot be weighed. Imponderabilia is which cannot be weighed. So energy is like lunar, solar energy, or electricity, X-ray, radium. So it all covers under imponderabilia or magnetic. Now potency is used. Whenever a drug is coming for testing, you will see whatever is written on the label. So what source will be, I mean, the ingredient will be mentioned from which you can know what source it is. Then you have to see the potency. So 3 potencies are there. One is decimal, which is denoted as X. Other is centesimal, which is denoted as C, and other is 50 millisimal, which is denoted as LM. Or or it is also written as 0/1, 0/2, like that. So these are the potencies used. Now, Ayush infrastructure or scope of drug market for about 140 crore domestic population plus export. This is a data which Ministry of Ayush publishes for the Ayush infrastructure of whole of India. So this last study which is published is in 2022. So from that I am giving you the figure. So as per record, a licensing drug manufacturing unit of homeopathy is about 384. Okay. And for all ASU and H combined, it is 8,700. So this is just to give an idea that how much Ayush sector is there in India. Now we will be entering our journey into the regulations. Now regulations is a very, very dry subject. Whenever you open these books, you think that I am a doctor. Now I have to read all this law related things. What is there? I can't understand, because these languages are written so that it cannot be modified. It is as it is. So why regulations are needed? Previously, whenever you come across the Drug and Cosmetic Act, there is an year mentioned, 1940, and the rules 1945. So you can understand that these acts and rules were formed before independence. Okay. So when there was a British rule, they used to first import medicines from the European countries or other. So what they felt,
that for the drugs which are being imported, there needs to be a sub-check, some regulations. So first the import regulations came, their standards came, what to be followed, the import regulation. Then when they started manufacturing in India, then there should be a control. So manufacturing regulations was done. So this way the regulations evolved, that there should be some standard, there should be some quality check. So these regulations was placed. So first, primarily any drug act or whatever like regulations is being formed by government, the prime motive is to protect the public. So on the base, you see to what is the main, most essential or what is the essence of this regulation is to promote public protection from hazard or harmful effects of drugs. Okay. Like we say in medicine when we take oath, then we say that if you can't cure or can't help, at least do not harm. Okay. So we have to promote public protection from hazardous or harmful effects of drugs. If we are not curing, at least we should not harm by giving a drug which can be harmful to them. Now, to protect their health, what we have to ensure? So we have to ensure the availability of drugs. We have to ensure three pillars. The three pillars on which drug regulation is the quality, the safety, and the efficacy. These are the three pillars which we have to keep in mind when we are giving any drug approval. Okay. Then next is, so what we have to define under the regulation. We have to describe or the prescribe the how to enforce the standards. Standard making body is the Pharmacopoeia Commission of Indian Homeopathy, Indian Medicine and Homeopathy. They are forming the pharmacopoeia standards. Now, how to enforce this standard for manufacturing, distribution, sale, marketing, testing, and also advertisement of drugs. You will see that advertisement of drugs is also an important part, because after all, our target is to protect the public. So if by seeing a wrong advertisement, they are taking self-medication, it will cause a harmful effect on them. So the advertisement needs regulation also for drugs. So in drug regulations, obviously they will prescribe how these medicines can be manufactured, how they can be sold, how they should be labeled, and how they will disseminate the information to the public. And after it has gone to the public, how will be the post-marketing surveillance of this drug, okay, or the monitoring of the drugs which we are taking under control of pharmacovigilance. Now, in how and in what manner or means they prescribe the requirements for commercial manufacturing and sale of this drug. Under these rules, it is prescribed what can be done. Okay. And also they prescribe what penal provisions will be there if what should not be done and you have done that. Okay. So committing any omission or violation, what will be the penal provisions? And they also define that who will be the authority who will take action. Okay. So like in the Drugs and Cosmetic Act, only the drug inspectors are mentioned. So drug inspector over here has a very much role or are empowered under the Drug Act. You must have read about the Supreme Court order, recent Supreme Court order, in which they have said that any cognizable offense under the Drug Act cannot be taken up by the police. It should be taken on only by the drug inspector. Only the drug inspector is empowered to take action. Are the basic things which are there in any drug regulation. So this is the phase of the two acts which we will be deliberating, or the Indian laws for drugs, the Drugs and Cosmetic Act 1940 and Rules 1945, and the Drugs and Magic Remedies Objectionable Advertisement Act 1954. So Drugs and Cosmetic Act is a central act. The central government makes this act, make the rules. Okay. But the enforcement of this act and rules is lying with the state government, because after all, the public health is a state chapter. So the action and all is taken by the state government. Only the act forming or the rule forming body is with the central government. Only in certain cases, the approval power is taken by the central government. In some cases, in homeopathy,
but not in ASU. In ASU, no power is given to the central government. Okay? So it is a central act to regulate the import, manufacture, distribution, and sale of drugs and cosmetics through licensing. It includes provision for regulation of homeopathy drugs in India. So we have specific provisions for homeopathy drugs, and we have a separate chapter for ASU drugs under this act, Common Act and. So over here, I have just summarized. You can take a picture if you want, or if the presentation will be shared, it will be with you. So, okay, so they will be shared, so you will have no issue. So the legal provision where all homeopathic drugs are mentioned, I have just summarized it over here. So under the Act, only two areas, only two portions the homeopathic drugs are mentioned. One is the first schedule, which has been recently added. And under the first schedule of the Drug Act, the homeopathic authoritative literature. There are about 20 books which has been mentioned, which will be considered as the authoritative homeopathic literature. So whatever drugs are already mentioned in this authoritative literature will be as a accepted drug. It will be not a new homeopathic drug. Then we have the second schedule, which prescribes the standards to be followed for homeopathy drugs, either domestic manufacture or either for import. What are standards they have to follow? It is mentioned under the second schedule. So under the Act, only homeopathy is mentioned over these two places. Under the rules, we have a definition of homeopathic drugs under Rule 2DD. Okay. Then we have our Central Drug Testing Laboratory, which is PCMNH for homeopathy drugs, which is mentioned under 3A7. We have specific provisions for homeopathy drugs regarding import. There is no specific provision of Ayurvedic Siddha Unani drugs for import under DNC because that time it was not considered. Ayurveda system was of Indian system, so there was a no concept of import. The import provisions has not been made for Ayurveda drugs. For homeopathy drugs, there is already import happening. So import provisions we have under 30A and 32A. Then we have specific sale provisions under 67A to H. It is whenever you see homeopathic drug rules, it is just consecutively following the allopathic drug rules. First allopathic sale license comes, then homeopathic sale license. First, then allopathic drug manufacturing license provisions come, then homeopathic. So like this, it is mentioned in this book. Because definition also in the broad definition of drug as a part is homeopathy drug. Yeah. Sale. No comment. No comment. When the menu, okay, no comment. Right now it is not there. Right now there is no sale provision for ASU drugs. Then we have the manufacturing license provision for homeopathy drugs. It is under 85A to I. Then specific packaging and labeling provision, which is very important for you. I will go into a detail of this. It is 106A and B. There is an exemption schedule under Schedule K that also I will mention. And we have specific good manufacturing practices, which the manufacturing side needs to study well. So that is Schedule M1. Now the regulatory framework. People usually don't understand what part comes under whose jurisdiction. So they raise various complaints to the central government, but most of the issues are not with the central government. It is on the part of the state government. So over here, I will demarcate what is the role of which body. So under central government, they only make the rules or make the changes under this DNC Act and rules. Okay. The act needs to be placed in the parliament. Only then any amendment can be done into it. Otherwise, rules, the ministry themselves can take the opinion about from their technical board and can make the amendment. And the central government only has powers to give direction to the state regarding the achieving the objectives of this act. If something is not being done properly under the act, then they can give directions to the state for uniform implementation of the act and rules.
Then we have under the central government, we have the Pharmacopoeia Commission of Indian Medicine and Homeopathy, which is the apex laboratory for both Indian system of medicine and homeopathy. Then I mentioned Ayush vertical in CDSCO, which is a recent development. So this is the central government. Now the state government. Under the state government, they are responsible for all the enforcement activities of the legal provisions under this act and rule. Then they appoint the licensing authority, they appoint the drug inspector, they appoint the drug controller in the state. They have their own state government drug testing laboratory. They will send the samples to them. They also appoint the government analyst under their state drug testing laboratory. Then we have statutory bodies, ASU DCC and ASU DTAB. ASU DCC is Ayurveda Siddha Unani Drug Consultative Committee, which is a broad committee where all representative of each state come and have a meeting with the central government of whatever issues they are facing in their state, what amendment they want to bring in under the rules, they will have a consultation with all the states. So this is the ASU DCC and one is ASU DTAB. It is Ayurveda Siddha Unani Drug Technical Advisory Board. So in this board, we have representation from practitioners, from manufacturers, from teaching side, academic side, and from the regulators. So all this sit together and whatever technical know-how they have to give regarding uniform implementation or regarding drug regulation of Ayush drugs, they give. And accordingly, if any changes is required in the rules, then the changes are made. Earlier, we used to have a subcommittee of homeopathy under the main drug technical advisory board of the allopathy side. Under that, there was a subcommittee of homeopathy who used to give specific input regarding homeopathy drugs. But now, experts of homeopathy are included in the Ayurveda Siddha Unani Drug Technical Advisory Board. Hmm. Hmm. For the state drug testing, for central, na. So for central, I've mentioned Pharmacopoeia Commission of Indian Medicine with the government. Those notifications are done by the central government. For the state government, the state. So now we enter into the homeopathic drug regulation. So like I mentioned in the act, only two places the homeopathy is mentioned. This is the first schedule where these books are the authoritative literature of homeopathy. This has been added recently, not revised. It was not there since so many years. Under definition, it was mentioned that homeopathic medicine will be the medicine which is already recognized in the homeopathic literature, authoritative homeopathic literature. But what are those literature was never mentioned. But recently we have notified this. There are 20 books. 20. All the pharmacopoeias are recognized. Apart from this books, other pharmacopoeias like which I will mention in second schedule. Apart from HPI, other pharmacopoeias of foreign countries like United States, United Kingdom, Germany, French, and European are also recognized under our Drugs and Cosmetic Act. But apart from this, the standards which are not prescribed under this pharmacopoeia, any other standards which the central government prescribes from time to time. So that was the act. Now the drug rules. Under drug rules, we have a specific definition regarding homeopathic drugs. So homeopathic drugs are medicine, internal or external use for human beings or animals, and they should be recorded in homeopathic proving. Homeopathic provings I mentioned, those are tested on the healthy human subject. The medicine is given and the symptoms are recorded, or which efficacy of which is established through clinical experience or research. And they are described in the homeopathy book specified in the first and second schedule. They should also be manufactured in accordance with the techniques of homeopathic pharmacy. Okay. Because we find that many of the herbal drugs are same as in Ayurveda and homeopathy. But to be called as homeopathic medicines, they should be prepared according to the homeopathic pharmacy. It also covers combination of ingredients of homeopathic drugs. Okay. But does not include any medicine given by injectable route. That is not homeopathy.
Then registered homeopathic medical practitioner, any practitioner who is registered as a homeopathic medical practitioner under central or state register is also recognized under this act. Then homeopathic pharmacopoeia laboratory, earlier this was the name, now it is Pharmacopoeia Commission of Indian Medicine and Homeopathy. It is the apex laboratory recognized as CDL for homeopathic drugs under Rule 3A, Sub Rule 7. Now this is very important, like your regarding your question, the import provision of homeopathic drugs. So it is, there are two provisions, 30AA and 32A. So 30AA, under 30AA, the new homeopathic medicine is defined. I mentioned our definition for homeopathic medicine under 2DD. So any medicine, any homeopathic medicine which is already there in the authoritative books or which are there in the pharmacopoeias which have been recognized under this act will be an existing homeopathic drug. For new homeopathic drugs, there are certain criteria. So first criteria is those homeopathic medicine which are not recognized in any of the pharmacopoeias or authoritative literature. Single homeopathic medicine. Those will be considered new homeopathic medicine. Second is a combination of homeopathic medicine where some ingredients are already existing and some is new. So it will be a new homeopathic medicine. Or a combination which is for a particular claim or a new claim, then will be, it is a new homeopathic medicine. Or any other fixed, any other earlier approved combination if the combination is being changed or the ratio is being changed or for a new claim, then also it will be a new homeopathic medicine. So these are the criteria of new homeopathic medicines when we will call it new. That for no for homeopathy. For homeopathy only whatever is there will be recognized. Separate. So on this, whatever is there for homeopathy that will be recognized. So over here for new homeopathic medicine, the approval is given by the central authority only. Okay. For import of homeopathic medicine also the approval is given by the central authority. Rest of the approvals are given by the state. So if someone wants to import a homeopathic medicine, they have to take the approval of Drug Controller General of India, that is sitting in the Central Drug Standard Control Organization, CDSCO. So they have to apply to the CDSCO for import of homeopathic medicine or for approval of new homeopathic medicine. If they are combining for the first time or ratio is being changed for the first time with a claim, new claim, then it will be considered as new homeopathic medicine. Central. Recently also we have issued 2-3 advisories that state, because whatever was the practice that state used to give, I don't know how, knowingly, unknowingly, they were giving all the combination approvals. So there were so many mushrooming of so many unrationalized combination of homeopathic medicine. So to bring a check, we have recently given advisory, which was already there in rule, but was not being practiced by the state. So now government is coming for change. Yeah. First time if you are taking, you have to give central approval. For new drugs, first time approval. हाँ, हाँ.
1, 2, 3, 4. You have to go 1, 2, 3, 4. Like that you have to go. First you have to see whether it is in the pharmacopoeia or not. Not in the pharmacopoeia, then it is new. Second, you have to see ki not recognized in authoritative literature also. Then second also you are not complying, so it is new. Third, you have to go a combination in which one of the ingredient is not only already recognized, then also new. Then fourth is ki a new claim you are giving. Already ingredients are there, but you are changing the ratio or a claim which is not there in the Medico or like a disease claim you are giving. Then also it will be new. New. Hmm. Hmm. So ingredients mentioned, you read this one, fourth one, ingredients mentioned, but now proposed to be combined for the first time in a fixed ratio, or if the ratio of ingredients in already marketed combination is proposed to be changed with certain claims, then also new. Now we have also included a provision, like many manufacturers were saying that whatever we are bringing in our research product and someone is just copying it and getting approval. So to promote research and to give benefit to the manufacturers, we have done that if they are coming with a research product with a and they are taking approval from the central authority, then it will be their product for 5 years. Any other company if want to make same combination, they have to take fresh approval from the central authority. So a new homeopathic medicine shall continue to be considered as new homeopathic medicine for a period of 5 years from the date of its first approval. Okay. Stability data is required for the new product. The This is- time of approval of the local society. Then we have to see For that a new drug. what type of product it is, whether it is a mother Look, tincture or suppose- whether it is dilution. For Okay. dilution, there is In no filing. mother tincture or dilution, require safety data or not? Sorry, Stability stability study. data. Stability studies is there, and in the GMP it is mentioned wherever it is required. No, I think stability data required at the time of licensing authority because no, we give the data of isolated stability or real time stability. ऐसा अपना होम्योपैथी में कुछ आया है? नहीं अभी नहीं आया अभी हमारे we usually see for three things. If it is containing a toxic substance, then safety, therapeutic efficacy is required, and drug proving is required. Proving required. Minimum yes, homeopathic Yeah, proving. for you, if you look see the na stability data for Ayush or the Unani medicine, they have one notified, They na, have. one We stability. don't. But accordingly, we have For our case, in the GMP, it is mentioned stability study wherever applicable. okay. Excuse me, ma'am. Where I just want Wherever to applicable. I just want to clarify about that point number 5. A new homeopathic medicine shall continue to be considered a new homeopathic medicine for a period of 5 Yeah, years yeah. from the date of its approval. Like you have taken approval from the central authority. Yeah. Okay, for a drug, X drug. Now Okay. your competitor manufacturer also want to produce the same medicine with the same combination. He may say that you have already have license, you have already licensed that license. He will copy and go to any state. He will say it is an already approved drug. Okay, he will go to Okay. state and take the approval. So that is not allowed. For 5 years, they have to take the approval of that drug which I have given approval to you. For 5 years, they have to take approval from the central authority only. They have to again give all the data regarding So therapeutic. then after that, after 5 years, After 5 years, it will be like because that buffer time is given for any new medicine to see in post-marketing surveillance. for a period of 5 years. 5 years, huh? And then suppose if it works, I mean after 5 years, then Then they can take. It will be an existing homeopathic medicine. नहीं पेटेंट से इसका कोई रिलेशन नहीं है पेटेंट इज आईपीआर लॉ okay so this is regarding import what is new homeopathic medicine is very essential and what is import and who is the approving authority in case of import and new I have mentioned it is the licensing authority under rule 21 which is the drug controller general of India who is also giving for the allopathic drugs 32 हाँ
फिर अगर मैं बता दूं तो उनका तो चला गया ना, जो एप्लीकेशन किए हैं ऑलरेडी, दे एप्लीकेशंस आर इन पाइपलाइन। नहीं, अप्रूव नहीं है कोई, क्योंकि अनरेगुलेटेड फॉर्म में ऑलरेडी स्टेट वे आर गिविंग ना, नाउ वी हैव पुट अ चेक ऑन दैट। हाँ, so you read this note for the purpose of safety, therapeutic efficacy of the medicine, including minimum homeopathic proving, shall be in accordance with the guidelines prescribed by CCR. To remove those confusion and remove that mushrooming of irrational combination. Yes, sir. Hmm. Hmm. You have to do. That is the problem now. Okay, you are from homeopathy side, so I say ki natrum and sulfur, they have different proving record, but natrum sulfur has a different proving record. No, why Master Haniman has done that? Individually, he could have combined, mixed the symptoms of both, but he has proved natrum sulfur separately now. So same, no, same. When you are combining, what reaction these medicines are having in between them, that also you have to study now. You can't just combine, any irrational combination is being done, and they are saying कि अच्छा A B C D E F G में ये सब सिम्टम है तो इसमें भी होगा, X में भी होगा. Madam, Okay. for So getting, now, for getting, we can take these questions later on. So now, sale license of homeopathic medicine. So sale, we have specific sale license for homeopathic medicine. Now this has been also eased out, like they have to apply in Form 19B with a fees of 2000, and their license will be valid forever. Only they have to give a self-compliance report every 5 years. Okay, so one-time registration, lifetime validity has been done. State has the power to give license for sale premises, and then the form in which the approval is given is 20C for retail and 20D for wholesale license of homeopathic medicine. Then we have specific provision for qualification of persons who will be there in the sale premises, like a homeopathic graduate, a pharmacy graduate, or a just graduate with 1 year experience of working with a homeopathic practitioner or working in any sale premises licensed under 20C or 20D. So these are the qualifications of the person on whom on whose records the license will be given. Qualification, you refer 67F. You have put no, okay. So homeopathic graduate, homeopathic doctor can have a sale license, or a pharmacy graduate, any pharmacy graduate, or a graduate with 1 year experience of working with a homeopathic practitioner or working in a sale premises, already licensed sale premises, if has a 1 year experience. Any field. No, any field. 1 year experience. It is mentioned in 67F. Rule 67F. Then 67G is the conditions of license. It is just general rule. So that was regarding sale license.
Now we are coming to manufacturing license. Manufacturing license is also given by the state authority. Only for the new approval, it will be going to the central authority. Now we have demarcated in 2 levels. It was not there earlier. This has been recently notified in October 2024. Like for single ingredient homeopathic drugs, all approvals can be given with a fees of 2,000 rupees. So any number of single ingredient homeopathic drugs with any potencies under one fees, 2,000 rupees. For combination products, per product, 200 rupees you have to deposit. And one-time license, lifetime validity is there. Only your GMP certificate needs to be retained every 5 years with a fees of 5,000. Also, we have now added loan license application for homeopathic medicine, that you don't have own a premises, but you want to hold the license. So you can tie up with a already GMP facility and take the license in your name. So manufacturing will be done at the GMP facility, but the license will be in your name. But both will be, onus will be on both. Okay. Then we have also introduced certificate of good manufacturing practices under 24C2. Then 85E, under if anyone is having a GMP premises for homeopathic medicine, they should have a full-time technical staff also. Okay, with the qualifications as mentioned under this rule. So no, for Ayurvedic it is Schedule T, and for homeopathic Schedule M1. Then they should have their own testing laboratory, or they can have a tie-up with a laboratory which is a private laboratory which is recognized under the rule 150. Okay. For manufacturing. So these are certain other aspects regarding the manufacturing license of homeopathic medicine. Now, very important thing is labeling and packaging of homeopathic medicine. Any homeopathic medicine should have on their label conspicuously written homeopathic medicine on every label, every container, innermost bottle also. So labeling homeopathic medicine should be mentioned. The the ingredient should be mentioned. If it is a botanical product, entire botanical name should be there with the potency. Okay. And if the multiple ingredients are there, then a ratio should be given, how much it is added. If it is more than if it contains alcohol, then percentage of volume by ethyl alcohol should also be mentioned on the label. Then 106B is very important, that no homeopathic medicine containing above 12% alcohol can be given in retail outlets up beyond 30 ml. Only 30 ml packaging is allowed. For homeopathic dispensaries and government dispensaries, 100 ml is allowed. Otherwise, in 30 ml in fact only it is allowed. Then homeopathic pharmacopoeia, this all you should, whoever is involved in testing and all, they should go through homeopathic pharmacopoeia of India, which mentions the standards which needs to be followed for the homeopathic drug. So 10 volumes are 68 has been added. So earlier it was 10 volumes, 1117 drugs. Now 68 has been added. So this gives a brief idea about the characterization, identification, testing of standards, and preparation of homeopathic medicine. So when you are visiting, you also see the HPI, or you should have a soft copy. Good manufacturing practices. This is very important for the drug inspectors as well as the manufacturers. The all the good manufacturing practices, wherever is there, they may make a general guideline which each manufacturer has to follow, like what premises should be there, what should be the procedures of making. So the main concept is how they will assure the quality of the finished product. So these are the general guidelines. For homeopathy, this was first notified in December 2008, and it is mandatory for all homeopathic manufacturers to have a GMP facility. Okay. So production and testing practices are there.
And for homeopathy, like it will also mention regarding the raw materials, the manufacturing processes, how the quality control should be maintained, and how the documentation needs to be done. For specific for homeopathic GMP, these all sections are mentioned with their equipment, what all are required, and what type of equipments are required for what type of packaging. Specific packaging requirements are also mentioned. So for mother tincture, potentization, container, trituration, syrups, ointment, ophthalmic, all these sections are mentioned under the GMP Schedule M1. Then we have a quality control division, where also you have to have a full-time technical staff who is expertise in quality control. For raw materials also, there has been provision which mention how it should be collected, how it should be stored, how to identify, how to handle, how to package, and purity and treatment before manufacturing. Then certain procedures of certain type of homeopathic medicines are mentioned, that how you will prepare mother tinctures, attenuation, trituration, formulation, and insert pellets, and how to maintain the laboratory controls. So over here it mentions about the stability and sterility test. Wherever applicable, it is mentioned. Expiry date, this is a very important topic, and I get many queries regarding this. For homeopathic medicines, it is mentioned not exceeding 60 months from the manufacturing date, except for homeopathic dilutions and back potencies, where expiry date need not be mentioned. Then under any GMP, you have to have fixed SOPs and records and registers, which will be inspected by the drug inspector, whoever is visiting. And you have to maintain all this record beyond 1 year of your expiry, or for 3 years, whichever is later. So these all records needs to be mentioned and will be verified by the drug inspector, who will be verifying your premises as per the Schedule M1 guidelines. Okay. Then role and responsibilities of inspector conducting the GMP inspection. I think these rules of the inspectors are same for all type of drugs, for allopathic drugs, ASU and H drugs. These are common, and this will be deliberated by Dr. So this I'm not going into the details. So I just want to mention that homeopathic drug inspectors are notified under Section 21, and their duties are same as allopathic drugs. So all things are same. Just they have to have their drugs tested from their notified government analyst, whoever is notified for testing of homeopathic drugs also. So duties all you will learn from Dr. Vijay, and he will give you practical experience also. So over here, I have just mentioned regarding the various forms which you need to know regarding inspection, testing, and manufacturing and sale of homeopathic medicine. So we'll have this presentation. So thank you all. Madam, Specific to homeopathic regulation. regarding the loan license, that manufacturing company having the GMP certificate can be outside state or should be inside the state. If suppose one state in our state, if farm want to manufacture a drug, but he don't have this facilities, and he can You manufacture in want other me to state. say ki, different states can Yeah, be yeah, there yeah. or not? Is Means possible? manufacturing facilities in Karnataka, and they want to take license from Manipur. Yes. Is it possible in case of loan license? These issues are coming, but right now I don't have any, like there is no I mean to say ki restriction on it, but it will be better that they take from the same state, because the inspector who will be inspecting has to see the GMP facility now. So And, how can an inspector of Manipur will see the facility of Karnataka? it should be in the same state. It should be in the same state over. Yeah. And while this giving GMP certificate, uh, Factory Act certificate should be included. Yeah, all the other acts and provisions, whatever is required to run a company will be applicable. Okay. Like in case of homeopathic medicine, they have to take approval from the excise department regarding alcohol.
And madam, the licensing authority for homeopathic drug, the qualification of licensing authority for homeopathic drug is not clearly mentioned in the Drug and Cosmetic Act and rule. Yeah. Whereas in the case of Asku drugs, it is Yeah. clearly mentioned. Yes. So I suggest to Yes, amendment in this regard. we also. are going in that direction, and soon we are also planning to bring all the ASU and H drug regulation yeah. together, Yeah. so that same thing Yeah, are for right. ASU and homeopathy. But drug inspector now it is okay. Drug inspector previously it was not But there. it is also again being revised. Yeah, drug inspector is Regarding coming new now. 167, you are saying, so Yeah, yeah. recent notification is there in February where Uh-huh. we are also amending the 167. And for this one, unique identification number for the advertisement, Hmm. there's Supreme Court has given the That state is order. regarding 170. It is Oh, not 170, related to 170. homeopathy. Yeah, It is not Is related. it now any decision has come I regarding can't say anything about that. It is not related to homeopathy. only for Asku drugs? It is for ASU drug. It is a sub judice topic, so we can't comment on that. If you see the 2025 DNC, it will be there. Because recently in 2024, we have made some amendment. It will not be there in the old book. Okay, one more. French. Only the homeopathic part. Only the homeopathic part. Okay, ma'am, for the sample we need to collect, suppose we have to take 4 bottles, right? 4 bottles. that We are means also 100 you- ml, yeah, minimum is 100 ml, right? So for that one, because only one we have to send it to the lab. no, see, 100 ml minimum is not written. There is a separate sampling provision, and you will also get an idea from Dr. Vijay how to do the sampling. And it is not like 4 in every cases. It is 3 and 4 in certain cases. If you are not taking directly from the manufacturer, then it is 4. So how much to take and all, we are in the process of making a guideline in similar lines, whatever is done with the allopathy side. So CDSCO has a detailed guideline regarding sampling. You can visit the CDSCO website and download the sampling guidelines and see how they are doing. In the same lines, we will form for ASU and HDRA. No. It will be sampling. I am telling the inspector's duties, sampling, and sending for government analysts. Whatever provisions are there, it is same for all type of drugs. For allopathy person can also come and tell them how to do sampling for homeopathic drugs or for ASU drugs. It is same. Those rules 21 to 25 is equally applicable for all type of drugs. For unlicensed drug also. Ma'am, what is the difference between the herbal drug and the Ashkenaz drug? Herbal drug, the word is not mentioned in the Drug and So you are Cosmetic Act. yourself telling them. So is it necessary to give license for herbal drugs by the licensing authority or? We don't have any definition of how to do it. Okay. Yeah. Please. मैडम, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि एक ऑफिसर को मल्टीपल चांस दिया जाता है, तो इसके कारण से जो आपका रेगुलेटरी और क्वालिटी है हाँ, इसमें बहुत इसके लिए भी affect- हमने कल ही डिस्कशन हुआ कि ये इशू है हर इसको- स्टेट में, नहीं तो हम उसको भी ये कर रहे हैं कि हम एक क्लियर कट एडवाइजरी दे देंगे कि हर स्टेट में कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं, ऑफ स्ट्रेंथ मैडम, होना चाहिए. मैडम क्यों ना इनको सेंट्रली ही अपॉइंट करके इनको स्टेट में अपॉइंट किया जाए rather than स्टेट अपॉइंट करें. अगर ऐसा ही होता तो अभी तक जैसे पीएससी और यूपीएससी अलग अलग क्यों है, फिर तो यूपीएससी ही होता, पीएससी क्यों जरूरत था.
In manufacturing, they can manufacture, but when it is going to retail outlet, it should be in small bottle. Whenever it is not going to the public, it is allowed. When it is going to public, then it is restricted. मैडम जी सर 1 minute सर 1 minute sir 1 minute Sir. One question, madam. sir 1 minute One question. madam 1 minute madam 1 minute madam 1 minute please madam last 1 minute. question sir Last बस question. last question बस sir मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ मैंने न्यू ड्रग्स के लिए लाइसेंस ले लिया हूँ आपने कहा कि वो लाइसेंस 5 इयर्स के लिए मेरे लिए पास रहेगा उसके बाद वो ड्रग्स तो कोई बना सकता है दूसरा स्टेट में तो मेरा मेहनत तो और कोई ले लिया लेकिन 5 साल तक कब का था? नहीं, अभी नहीं। तो क्या हो रहा है कि आपने आज किया, कल कोई और बना रहा है। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा उसको तो अभी 5 साल किया ना, वही तो बोल रहे हैं। 5 साल तो क्या मेरे मेहनत को 5 साल का फिर ले लेगा अभी क्या तो है, अभी market- आपने आज बनाया, कल ही कोई और बना रहा है। उसको तो कंट्रोल मैडम आप भी लोग कर सकते हैं करके 5 साल तो किया है। 5 साल मैडम न्यू ड्रग अप्रूवल के लिए कितना टाइम लगेगा अगर मान ले हम लोग अप्रोच न्यू ड्रग होम्योपैथिक मेडिसिन में एकदम सब डॉक्यूमेंट क्लियर है तो आज देंगे, कल हो जाएगा। ठीक है थैंक यू Really, thank you sir, thank you ma'am थैंक for यू your such a informative lecture. I would request SC Verma sir to kindly give the certificate to ma'am. Photograph. You can take. Thank you, sir. Our next speaker is Dr. Vijay Gupta. He is the Principal Scientific Officer, Ayurveda. He is MD in Ayurveda. He is having the vast experience in the standardization and quality control of Ayurveda, Siddha, Unani and drugs. He is one of the major contributor for the Ayurvedic pharmacopoeia. He is member of certain pharmacopoeia committees. He is having more than 40 research articles in the Ayurveda. So I would request Dr. Vijay Gupta to kindly deliver his lecture. थैंक यू डॉक्टर साहब आफ्टरनून ऑल सबको सब भूख तो नहीं लग रही अरे नहीं सर सबको नहीं इन्फॉर्मेटिव लेक्चर है तो सर 15 मिनट में नहीं 15 मिनट लेक्चर खत्म कर लेते हैं 15 मिनट में और 10 मिनट में फिर डिस्कशन कर लेते हैं तो एज ऑल वी नो कि शेल्फ लाइफ क्या है इट इज द लेंथ ऑफ द टाइम ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट कैन इन विच द ड्रग कैन बी स्टोर्ड अंडर नॉर्मल कंडीशन बिफोर इट इज कंसिडर्ड unfit for the use. Unfit for the use means therapeutic use. It is the period during which a drug product is expected to remain within its defined specification. जो उसका स्पेसिफिकेशन डिफाइंड है जो इसके अंदर DT है कलर है उसकी थेरेपेटिक एफिकेसी है वट एवर द माइक्रोबियल लिमिट्स हैं वट एवर द लिमिट स्पेसिफाइड इन द मोनोग्राफ और स्पेसिफिकेशन उस लिमिट के अंदर जिस पीरियड के बीच में वो रहेगी इट इज उसकी शेल्फ. It is the ability of the drug to resist deterioration. Deterioration means खराब होना. तो जो ड्रग का इनहेरेंट जो प्रॉपर्टी है कि कितने पीरियड तक वो ड्रग जो है वो डिटोरिएशन को रेसिस्ट करेगी और ये जो डिपेंड करता है किस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा
ड्रग की डोसेज फॉर्म पे, तो ड्रग की डोसेज फॉर्म पे और उसके इनहेरेंट जो मॉलिक्यूल है, जो सब्सटेंसेस हैं, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, उस पे। जैसे मेटल मिनरल का कोई कंपाउंड होगा तो उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी, हर्बल पॉलीप्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ एज कम्पेयर टू मेटल मिनरल कम होगी। और टैबलेट है तो उसमें डिटोरिएशन थोड़ा सा लेट होता है, पाउडर है तो जल्दी होता है, तो उसकी जो डिटोरिएशन को रेसिस्ट करने की कैपेबिलिटी है वो शेल्फ लाइफ है, वो भी एक शेल्फ लाइफ का ही पार्ट है। कैपेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन इन स्पेसिफिक कंटेनर। स्पेसिफिक कंटेनर मीन्स जिस कंटेनर में, जिस पैकेजिंग सिस्टम में मैन्युफैक्चरर्स ने उसको पैक करके मार्केट में सेल आउट किया है। ऐसा नहीं होता है कि आपने प्रोडक्ट लिया मार्केट से, उसको अपने किसी सेकेंडरी पैकेजिंग में आपने उसको रखा, फिर दो दिन के बाद बोला कि आपका प्रोडक्ट डिटोरिएट हो। जिस कंडीशन में, जिस प्रोडक्ट को जिस कंटेनर में स्पेसिफाई किया हुआ है मैन्युफैक्चर ने, उसी में आपको स्टोर करना है एज पर हिज प्रिस्क्राइब कंडीशन। प्रिस्क्राइब कंडीशन जैसे उसने लिखा कि स्टोर इन कूल टेम्परेचर। अगर आप उसको हॉट में रख देंगे तो नेचुरली ख़राब हो जाएगा। जैसे पोलियो वैक्सीन होती है, तो देखा होगा ना कि वो 5-6 घंटे बाद वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। क्यों हो गई? क्योंकि आपने जो उसमें प्रिस्क्राइब कंडीशन थी उसको फॉलो नहीं की। Time from the date of manufacturing and packaging of the formulation until its chemical or biological activity is not less than the predetermined level of label potency. Pre-label potency जो है थोड़ा सा ASU मेडिसिन में तो नहीं आती है, बट मॉडर्न मेडिसिन में अगर देखेंगे तो प्री-लेबल पोटेंसी जो उसमें पहले लिखा होता है, जैसे पैरासीटामोल 500 mg, तो जो पैरासीटामोल 500 mg लिखा है तो उसके अंदर जो एक्टिव है पैरासीटामोल, उसकी 500 mg की स्पेसिफिकेशन लिमिट जब वो डिस्क्राइब करता है मैन्युफैक्चर, तो वो लिख के देता है स्पेसिफिकेशन में 500 mg +-10%, मतलब 10% हो सकता है कि ज़्यादा भी हो, 5% कम भी हो। तो उस रिमेन के उस लिमिट के अंदर वो अगर वो रहता है तो प्रोडक्ट जो है आपका स्टेबल है, अगर उससे बियॉन्ड हो जाएगा तो प्रोडक्ट अनस्टेबल। और एक मॉडल में तो चलता है कि 90% ऑफ द लेबल पोटेंसी मिनिमम उसके अंदर रिटेन होनी चाहिए ड्यूरिंग दिस पीरियड, मिनिमम 90%। तो टाइप ऑफ स्टेबिलिटी में 4 टाइप्स की स्टेबिलिटी में जो मेन कंसिडर करते हैं, केमिकल, फिजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक। ठीक है, तो रिसेंट अमेंडमेंट के बारे में आई थिंक सबको पता होगा कि 2009 में ये फर्स्ट टाइम रूल इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर 2016 में इसको अमेंड कर दिया गया। और पहले जो गाइडलाइंस थी 2009 में प्रिस्क्राइब नहीं थी कि शेल्फ लाइफ करनी कैसे, जस्ट एक दे दिया गया कि जो क्लासिकल डोसेज फॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको शेल्फ लाइफ टेबल पे मेंटेन करनी है, लिखनी है। बट इंडस्ट्री ने कंसर्न रेज किया कि शेल्फ लाइफ लिख तो देंगे पर करनी कैसे, इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं थी। तो 2016 में जब बजट को रिवाइज किया गया तो बताया गया कि कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है एज प्रिस्क्राइब्ड इन द API पार्ट 1 वॉल्यूम 8। ठीक है, और ये जो पार्ट 1 वॉल्यूम 8 है API का, ये हमारे तीनों इंडस्ट्रीज के लिए है, इक्वली एप्लीकेबल है, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स के लिए, चाहे वो क्लासिकल हो, पेटेंट प्रोप्राइटरी हो, सेक्शन 3A में डिफाइंड हो या सेक्शन 3H में डिफाइंड हो। सेक्शन 3A के बारे में सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक अभी तक, है ना। सेक्शन 3A में जो मेडिसिन आती हैं ASU मेडिसिन कौन सी हुई, मोटा मोटा, मतलब प्रॉपर लैंग्वेज तो नहीं करिए, बताइए जल्दी से। जैसे सेक्शन 3A में जो DNC एक्ट है, सेक्शन 3A, इसमें क्लासिकल मेडिसिन हम बोलते हैं, किसको बोलेंगे क्लासिकल मेडिसिन को? जो फर्स्ट शेड्यूल, और पेटेंट प्रोप्राइटरी जो हमने, हाँ ठीक है। अब जैसे अश्वगंधा और जिंकसेंग को मिलाकर मैंने एक फॉर्मुलेशन बनाया तो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, आप बताइए। नहीं, चलिए, नहीं है, सर ने पकड़ा ना, मैं इसलिए फोकस कर रहा था कि जिंकसेंग कहाँ है क्लासिकल बुक्स में, तो वो आयुर्वेदिक की ड्रग नहीं है, ना सिद्धा है ना यूनानी, तो वो ASU मेडिसिन में कहीं भी नहीं आएगा, है ना। चाइनीज में उससे हमें मतलब ही नहीं है ना, वो हमारे रिकॉग्नाइज सिस्टम नहीं है इंडिया में अभी। नहीं, इंडियन तो आप कुछ भी, इंडियन तो आप कुछ भी बोल दीजिए, हैं सर,
आयुर्वेदिक में कह रहा हूँ ना, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन में तो नहीं आया, तो वो ना क्लासिकल नहीं, प्रोप्राइटरी भी नहीं है डॉक्टर, उसका अप्रूवल एएसयू मेडिसिन कैटेगरी में नहीं मिलेगा। ठीक है, बट देखेंगे, सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगी प्रोडक्ट। जो रूल गजट के अंदर लिख के आया था, उसके अंदर जो मेन बातें थी, उसमें अगर हम डिस्कस करते हैं तो क्लियर कट आया था कि जो डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ एएसयू मेडिसिन है उसको क्लियरली लेबल पे मेंशन करना है, जैसा आज की डेट में लगभग लगभग हर कंपनी फॉलो कर रही है। एंड आफ्टर द स्टेट डेट ऑफ एक्सपायरी नो मेडिसिन शैल बी मार्केटेड, सोल्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और कंज्यूम्ड। ये क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि पहले क्या करते थे, केमिस्ट क्या बोलते थे कि जितनी पुरानी उतनी अच्छी है। ठीक है, अब वो चाहे प्रोडक्ट के अंदर फंगस लग रहा हो, 10 साल पुरानी हो, 20 साल पुरानी हो, किसी आयुर्वेदिक मेडिसिन खराब नहीं होती, तो इसलिए उस मिसकंसेप्शन को हटाने के लिए लिखना पड़ा कि मार्केटेड भी नहीं करनी है, सोल्ड भी नहीं करनी है, डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करनी है, नहीं तो फ्री डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कई बार, डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करना, कंज्यूम भी नहीं करना। और ये जो रूल 2016 में आया था, तो उस समय पब्लिक जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको ध्यान में रखते हुए दिया गया कि गाइडलाइन जो है आफ्टर 3 ईयर्स ये फॉलो होंगी, और ये 3 साल तो बीत चुके, अब तो ऑलमोस्ट 8 ईयर्स हो गए हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। एवरी पर्सन अप्लाइंग फॉर द लाइसेंस, जब पर्सन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे या रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे, किसकी सेक्शन में? अंडर सेक्शन 3H या 3A। मतलब 3H के लिए तो कंपलसरी है कि SLA स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ को जब डेटा सबमिट करेंगे तो शेल्फ लाइफ का डेटा देना है। 3A के लिए कंपलसरी नहीं, दे सकते हैं किस शर्त पे? अगर आपको शेल्फ लाइफ, अगर आप चाहते हो कि शेल्फ लाइफ बियॉन्ड दी प्रिस्क्राइब लिमिट एक्सटेंड करनी है, अदरवाइज ये नॉन कंपल्सरी। नहीं, आप 5 साल भी दे सकते हैं, सपोर्टिव डेटा देना पड़ेगा, है ना। बट अगर क्लासिकल मेडिसिन जो बना रहे हैं सेक्शन 3A में बना रहे हैं, 3A के अंदर डिजाइन कर रहे हैं ड्रग को और उसके अंदर उसको ऐसा ही बना रहे हैं, तो मैक्सिमम जो अभी लिमिट है विदाउट शेल्फ लाइफ कंडक्ट डेटा सबमिट विदाउट एनी स्टडी आपको देना है एज पर द प्रिस्क्राइब लिमिट, अदरवाइज उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो डेटा सबमिट करना है। 3H के लिए कंपलसरी है। क्लियर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रियल। अभी देखिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आ रहा है, अंडर अप्रूवल है, तो इसलिए अभी तो यही रियल टाइम है। जब अप्रूवल हो जाएगा, प्रॉपर गजेटेड हो जाएगा, तो उसके अंदर एक्सलेटेड इनटू 4 टाइम्स, क्योंकि वो इसलिए फैसिलिटेट किया गया। तो 6 महीने से बियॉन्ड हम ज़्यादा जाते नहीं है रियल टाइम पे, एक्सलेटेड पे, एक्सलेटेड पे। तो मैक्सिमम 2 ईयर्स की शेल्फ लाइफ आपको एक्सलेटेड बेसिस पे मिल जाएगी। उसके बाद उसके बियॉन्ड जाते हैं तो रियल टाइम। तो गाइडलाइन कौन सी फॉलो करनी है? पहले डिस्कस हो गया पार्ट 1, API पार्ट 1 वॉल्यूम 8 फॉर ऑल ASU मेडिसिन। ठीक है, SLA before granting the license or renewal of license ensure the validity of the data submitted by the manufacturer। मतलब SLA जो होंगे जब लाइसेंस आपको इशू करेंगे, तो जो डेटा सबमिट करेगा मैन्युफैक्चरर उसको वैलिडेट करवा सकता है, देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक, अगर SLA एट एनी टाइम ऑफ पॉइंट डायरेक्ट द मैन्युफैक्चरर टू प्रोवाइड द सैंपल ऑफ द मेडिसिन, अगर उसको लगता है कि आपका प्रोडक्ट सही नहीं है, आप ज़्यादा एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं शेल्फ लाइफ को, आपसे सैंपल भी वो ले सकता है। He can take the samples from manufacturer। और कहाँ भेजेगा उसको एनालिसिस के लिए? PLI, जो हमारा ऑफिस है। पहले जब गजेटेड नोटिफाई हुआ था 2016 में, तो हमारा ऑफिस का नाम, ये 3 लैब्स की बताया भी होगा, सर ने बताया था पहले लेक्चर में, 3 ऑफिस थे, HPL, PLM एंड PCM&H। अब ये मर्ज होके PCM&H में। तो गजट के अंदर PLI नहीं है, इसलिए PLM लिखा हुआ, अदरवाइज ये PCM&H आज की डेट में कंसिडर करना है फॉर इंडिपेंडेंट वैलिडेशन। और जो भी PCM का जो भी वर्डिक्ट होगा वो फाइनल है। Where the manufacturer fails to comply the direction of the SLA, the license for the manufacturer of the medicine shall be liable for suspension। अगर SLA की बात नेचुरल है, अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं मानता है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा, गिविंग ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर द नेक्स्ट हियरिंग। एनी पर्सन एग्रीवेट
बाय द ऑर्डर पास बाय एसएलए में विद इन 60 डेज। अगर उसको कोई लगता है प्रॉब्लम हो गई, एसएलए ने गलत डिसीजन लिया, तो विद इन 60 डेज उसको अपील करने का ऑप्शन होता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद क्या फिर ऑप्शन होगा, फिर वो कहाँ से मैटर को रेफर करेगा, अगेन पीसीआई मैंडेट। पीसीआई मैंडेट तो जो डिसीजन होगा वो फाइनल। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, जो जितनी भी डोसेज फॉर्म्स थी और द क्लासिकल डोसेज फॉर्म, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, इन तीनों ड्रग्स को डोसेज फॉर्म में क्लासिफाई करते हुए मैक्सिमम शेल्फ लाइफ एक डिसाइड कर दी फॉर द क्लासिकल मेडिसिन। अगर पेटेंट प्रोप्राइटरी में होगी तो आपको ईच एंड एवरी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ करनी है, ठीक है। तो क्या उन्होंने डोसेज फॉर्म के लिए शेल्फ लाइफ दिया, जैसे अंजन है, अगर वो सिंपल हर्बल मेडिसिन से बना है तो 1 ईयर। इफ अगर मेडिसिन इसके मतलब हर्बल के साथ उसमें कुछ मर्कुरियल प्रिपरेशन है, मेटेलिक प्रिपरेशन से, तो मैक्सिमम 2 ईयर। अर्थ के लिए 1 ईयर, अवले के लिए 3 ईयर, एटसेट्रा। ये शेल्फ लाइफ उन्होंने प्रिस्क्राइब करी, ये आप बजट में देख सकते हैं, तो क्लियर है, ठीक है। जैसे टैबलेट्स हैं, अगर टैबलेट केवल उसके अंदर हर्बल मेडिसिन है तो मैक्सिमम शेल्फ लाइफ दिया 3 ईयर। अगर उसके अंदर कुछ मेटेलिक प्रिपरेशंस भी हैं तो उसके अंदर उसकी शेल्फ लाइफ अप टू 10 ईयर, ठीक है। ये ऐसे क्लासिकल डोसेज फॉर्म से आयुर्वेदा की, ये सिद्धा की, इसके बाद ये यूनानी, ठीक है। ये तो सब मतलब बजट में लिखा हुआ है, इसमें ज़्यादा डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। अर्क या जीव की 5 ईयर, ये स्पेशल 2016 में जब ये गाइडलाइन पब्लिश हुई थी तो उसके अंदर था कि डेटा में सबमिट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सीलरेटेड डेटा, एक्सीलरेटेड स्टडी। फिर इंडस्ट्रीज ने डिमांड करी कि भाई हमें एक्सीलरेटेड करने, रियल टाइम ही एप्लीकेबल था। फिर इंडस्ट्रीज ने प्रॉब्लम रेज की थी कि हमें एक्सीलरेटेड करने की परमिशन दी जाए, तो उसको गवर्नमेंट 2019 में नोटिफाई कर दिया था कि एक्सीलरेटेड डेटा में भी वैलिड। गाइडलाइंस के लिए ऑलरेडी बताई थी आपको कि एपीआई पार्ट 1 वॉल्यूम 8 को में एज ए गाइडलाइन कंसीडर करना है। गाइडलाइंस में क्या क्या कवर करा है, हमारे जो बजट है उसके अंदर जो अपेंडिक्स में दिया हुआ है, जनरल इंफॉर्मेशन, स्कोप, अप्रोच, क्लोजर सिस्टम, स्पेसिफिकेशन, क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ, टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, स्टोरेज कंडीशंस क्या होनी चाहिए, इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। अच्छा अभी बताइए, जैसे पीछे गए हम आयुर्वेदा मेडिसिन में, अब आयुर्वेदिक इंजेक्शन की क्या शेल्फ लाइफ होगी, बताइए। देखिए क्लासिकल में तो है ही नहीं, ठीक है, और पेटेंट प्रोप्राइटरी में साफ साफ लिखा हुआ है नॉट इन पैरेंटल रूट, पेरेंटल रूट को प्रोहिबिट किया है, तो यानी कि इंजेक्शन की शेल्फ, आप इंजेक्शन का लाइसेंस दे ही नहीं सकते। शेल्फ लाइफ तो वो कर लेगा बट लाइसेंस इशू नहीं है। सर पहले आते थे जब, ठीक है, आते थे पहले, तो ये क्लियर हो गया ना। ऐसी डोसेज फॉर्म जो आयुर्वेदा क्लासिक्स में मेंशन है, उसकी डेरिवेटिव्स हों, सेकेंडरी फॉर्म्स हों, बट पैरेंटल रूट उसका नहीं होना चाहिए। इसी पे अभी शेल्फ लाइफ, अभी गाइडलाइंस इशू करी है नेजल ड्रॉप के लिए, नेजल स्प्रे के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, कि नेजल स्प्रे को आप परमिट कर सकते हैं। जितने एसएलएज हैं उनको आइडिया होना चाहिए कि नेजल स्प्रे के लिए, आयुर्वेदिक नेजल स्प्रे के लिए गाइडलाइंस इशू हो गई है, उसको आप लाइसेंस दे सकते हैं उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई नेजल स्प्रे बना के लाए तो आप कह दें कि नहीं उसकी डोसेज फॉर्म तो आयुर्वेदा में दी नहीं हुई है। हाँ ठीक है। अब पर्पस हम क्यों करते हैं स्टेबिलिटी, क्योंकि हमारी जो ड्रग्स है मेनली किससे डिराइव्ड है,
हमारी जो मेन जो इंग्रेडिएंट है क्या है ड्रग्स का, हर्बल है, ऑर्गेनिक नेचर है। तो ऑर्गेनिक नेचर की जो मटेरियल होंगे उस पर किस चीज़ का इफेक्ट ज़्यादा आएगा, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का और लाइट का। साथ में क्या आएगा, टाइम ड्यूरेशन, कितने दिन तक इसको ये एक्सट्रीम जो कंडीशन है कितने दिन तक उसको फेस करनी पड़ रही है, उसी हिसाब से उसमें डिटोरिएशन होगा। ठीक है। फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं शेल्फ लाइफ को, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे पहले मैंने बोला नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, डोसेज फॉर्म, इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रोडक्ट। अगर इंग्रेडिएंट हर्बल हैं तो शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी, अगर मेटल मिनरल होंगे तो शेल्फ लाइफ ज़्यादा। स्टेबिलिटी ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो एक्टिव उसके अंदर कंपाउंड है उसी की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है। पैकेजिंग, जैसे कि अगर हर्बल के अंदर भी लेंगे, जैसे सौंठ है, सौंठ के अंदर जो शुंठी है, जो जिंजर है, उसके अंदर कीड़े जल्दी पड़ जाते हैं एज कम्पेयर टू मेटल मिनरल दूसरी हर्बल भी। जैसे कि अगर आप उसके संग आंवला चूर्ण से भी कंपेयर करेंगे तो आंवला चूर्ण में कीड़े जनरली नहीं पड़ेंगे जितनी जल्दी शुंठी में पड़ जाएंगे। घर में भी देखेंगे हल्दी के अंदर पड़ जाते हैं जल्दी कीड़े, है ना, मुलेठी में जल्दी आ जाते हैं, अश्वगंधा में नहीं आएंगे, तुरंत नहीं आएगा। तो उसकी नेचर है। पैकेजिंग मटेरियल पे डिपेंड करेगा, रोबस्ट पैकेजिंग कंटेनर्स होंगे, मटेरियल होगा तो आपकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी। स्टोरेज कंडीशन कहाँ आपने स्टोर किया, प्रॉपरली किया है नहीं किया, एक्सीपेंट उसके अंदर कुछ मिलाया, प्रिजर्वेटिव्स मिलाया, तो उसकी शेल्फ लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी, अदरवाइज मे भी कम रहे। माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन ड्यूरिंग हैंडलिंग, ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ड्यूरिंग पैकेजिंग, पोटेंशियल इंटरेक्शन बिटवीन दी एक्टिव इनएक्टिव इंग्रेडिएंट, कई बार दोनों में कोई इंटरेक्शन हो गया तो शेल्फ लाइफ उसकी डिटोरिएट हो गई। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या आपने अडॉप्ट किया है, कितना रोबस्ट था, कितना जीएमपी गाइडलाइंस को फॉलो किया, कितना स्टेराइल कंडीशंस थी, उस पर भी डिपेंड करेगा। स्टोरेज कंडीशन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, पोस्ट मार्केटिंग स्टोरेज और हैंडलिंग, ओवरऑल हैंडलिंग। तो शेल्फ लाइफ को जब हम करते हैं तो मेनली कैसे करेंगे, सबको आइडिया है कुछ, जो मैन्युफैक्चरर्स कौन कौन है मैन्युफैक्चरिंग साइड से, एक ही है। हाँ हाँ, अब मिनिमम स्टार्टिंग में लेते हैं, बिल्कुल जब बैच आपने कोई प्रोडक्ट नया बनाने वाले हैं तो कैसे शेल्फ लाइफ करेंगे, मिनिमम 3 बैचेस बनाएंगे। 3 बैच बनाएंगे मीन्स ये नहीं कि एक ही बैच बनाया उसको 3 में डिवाइड कर दिया। हाँ, कंपनियां क्या करती हैं 90%, एक बैच बनाया उसको नाम दिया ए बी और सी, ऐसा नहीं। आपको 3 डिफरेंट बैच बनाने हैं, उसके अंदर सेम कंपोजिशन होना चाहिए, सेम उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो आप मार्केट में यूज़ करना चाहते हैं। क्यों, बैच साइज सेम नहीं होता, बैच साइज तो 1/10 है। हाँ, दूसरा क्या, जब हम शेल्फ लाइफ या इनिशिएट करते हैं स्टडी तो कई कंपनियां या मैन्युफैक्चरर अच्छे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कमर्शियल बैच नहीं है, वो पायलट बैच है। स्टार्टिंग में लेके चले आपने, सारे प्रोडक्ट अच्छे लिए, और जब मार्केट में आपने एक्चुअल लिया तो इंफीरियर प्रोडक्ट्स को लेना शुरू कर बिजनेस। भाई आप नहीं, मैं तो 3 बैच का ही 3 बैच बनाने हैं। ठीक है, मिनिमम 3 बैच बनाने हैं, और उस बैच का साइज क्या होना चाहिए, जो कमर्शियल बैच का 1/10 ऑफ दी कमर्शियल बैच। अगर कमर्शियल बैच आप सोचते हैं मैं 100 kg का बनाऊंगा तो मिनिमम पायलट स्टडी कितने पे करेंगे, 10 kg। रवि एक गिलास बोल देना यार, एक गिलास बोल दो, खाली गिलास बोल। तीनों बैच 10 kg के, और कहाँ बनाएंगे, जीएमपी फैसिलिटी जरूरी नहीं है, चलिए जीएमपी फैसिलिटी तो होनी चाहिए यहाँ पर, जीएमपी फैसिलिटी में, और उसी मशीन में मैक्सिमम को ट्रायल करना चाहिए जो कमर्शियली यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि लैब में छोटे से भगोने में बना लिया, है ना, डिफरेंस आता है ना सर। हाँ, वो वहाँ पे छोटे से भगोने बनाएंगे 1 घंटे में बन जाएगा प्रोडक्ट,
जब कमर्शियली बनाते हैं तो वो 3 घंटे 4 घंटे तक 5 घंटे तक हीटिंग जाती है। डेफिनेट overall quality of the batch of the drug placed in formal stability study should be representative of the quality, means quality of the ingredient should be as per the आपका जो भी प्रोटोकॉल आप यूज करेंगे जो कमर्शियली प्रोडक्शन में यूज करेंगे। wherever possible batch of the drug product should be manufactured by using different batch of the drug means जो या raw material should be of 3 batch, उनका भी मटेरियल अगर अलग अलग सप्लाई चेन से आया है उससे लेके प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको फ्यूचर में बैच वेरिएशन मिनिमल मिलेगा, क्योंकि आप रेंज पहले ही डिसाइड कर लेंगे। अदरवाइज आपने सेम इंग्रेडिएंट्स को लेके 3 बैच बनाए तो रेंज ऑफ डिफरेंस आपको आइडिया नहीं लगेगा। स्टेबिलिटी टू बी परफॉर्म्ड ऑन ईच इंडिविजुअल स्ट्रेंथ मीन्स जैसे वसंत कुसुमाकर रस कई कंपनियां बनाती हैं 125 mg, कई बनाती हैं वसंत कुसुमाकर रस 250 mg। पैरासीटामोल देखा है 250 mg, पैरासीटामोल 500 mg। तो दोनों में क्या फर्क हुआ? दोनों टैबलेट हैं बट दोनों में स्ट्रेंथ। अब तो 650 भी आ गया, 1000 भी आता है सर। उससे फर्क नहीं पड़ेगा सर। जैसे कि हाँ नहीं उसमें तो पैक साइज हुआ। स्ट्रेंथ जो है मेनली आपके मेन जो कंसीडर करेंगे किसमें? कैप्सूल्स में, टैबलेट में, सिरप में, है ना? नहीं सेमी सॉलिड में क्रीम में होगा, जैसे क्रीम है पैक साइज के अंदर, जैसे च्यवनप्राश 2 ग्राम, च्यवनप्राश 250 ग्राम, उसके अंदर अगर आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ द कंटेनर सेम है, स्ट्रेंथ ऑफ द कंटेनर बिल्कुल सेम है तो आप एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। बट ये नहीं कि आप स्टेबिलिटी स्टडी करें 1 kg 100 ग्राम में और उसको 5 kg में एक्स्ट्रापोलेट करें, ऐसा नहीं होता। नहीं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप कहेंगे मेरा कंटेनर सेम है बट 50 mg के अंदर डिटोरिएशन इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना 5 kg। हाँ 50 ग्राम का जो बैच साइज है उसको आप 250 तक ले सकते हैं, 250 ग्राम तक। एक लास्ट चीज है, स्टेबिलिटी टू बी डन इन पैकेजिंग सिस्टम विच इज इंटेंडेड टू बी मार्केटेड। इसका एग्जांपल बताइए सर, कोई आपके अलावा एनीवन? इधर मैन्युफैक्चर होगा। लास्ट लाइन का मीनिंग क्या होगा? स्टेबिलिटी टू बी डन इन पैकेजिंग सिस्टम विच इज इंटेंडेड टू बी मार्केटेड। हाँ नहीं तो क्या होता है कई बार स्टेबिलिटी स्टडीज करी हमने एचडीपी कंटेनर्स में, मार्केट में लॉन्च किया पाउच पैकिंग में। स्टेबिलिटी स्टडीज करी ग्लास बॉटल में, मार्केट में लॉन्च किया प्लास्टिक में, पेट बॉटल्स में। फिनिश प्रोडक्ट के अंदर वही स्टेबिलिटी पैकेजिंग सिस्टम, क्लोजर सिस्टम होना चाहिए जो सेम। ठीक है ना? अप्रोच क्या होगी इसमें? 2 अप्रोच हैं। फर्स्ट अप्रोच है जब आप नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जो कंडीशन अभी हमने डिस्कस करी, आप 1/10 ऑफ द बैच लेंगे, डिफरेंट उसको कंडीशन बनाएंगे, उसको स्टेबिलिटी स्टडीज करेंगे, ठीक, फॉर द न्यू प्रोडक्ट। अब पहले जब ये गाइडलाइंस निकली थी तो उसमें उससे पहले भी प्रोडक्ट बहुत सारे कमर्शियली आ रहे थे, पीएनपी प्रोडक्ट, तो उसके लिए कैसे स्टेबिलिटी स्टडीज करेंगे? अब वो तब 5 साल तो लगाएगा नहीं दोबारा इंडस्ट्री वाला, नहीं एक्सेप्टेड भी नहीं। उन्होंने क्या स्कोप दिया उसके अंदर? क्रॉस सेक्शनल अप्रोच। अगर आपके पास लास्ट 5 ईयर्स के 6 मंथ्स के गैप पे बने हुए बैचेस अवेलेबल हैं, जैसे
आज 2025 चल रहा है, 2020 टू 2025 आफ्टर एवरी 6 मंथ्स के आपके पास बैचेस अवेलेबल हैं इन क्यूसी कंट्रोल। जनवरी 2020, जुलाई 2020, जनवरी 21, जुलाई 21, ऐसे करके आपके पास जितने ईयर्स के बैच इकट्ठे हैं उसका आप एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एनालिसिस करके जो डेटा जनरेट होगा उसके बिहाफ पे आप शेल्फ लाइफ को ड्रॉ करें। तो उससे क्या बच गया? टाइम बच गया, पैसा बच गया। अदरवाइज 5 ईयर्स की स्टेबिलिटी में बहुत समय लगेगा आपको, पैसा भी लगेगा, मैन पावर भी लगेगी। इसके अंदर आपने क्या करा, लास्ट 5 ईयर्स के जस्ट अपने क्वालिटी कंट्रोल से, सबके पास होता है, क्वालिटी कंट्रोल से बैच पिक आउट करा, उनको एनालिसिस किया, जहाँ पे जिस जिस टाइम ड्यूरेशन तक गैप आ गया उसके जस्ट पहले तक शेल्फ लाइफ को आपने डिटर्मिन। ठीक है, तो इसको बोला गया क्रॉस सेक्शनल अप्रोच। आज की डेट में इसका यूटिलिटी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि अब गजट आए हुए 8 ईयर, मतलब 2016 में आया था, तो आज लगभग 9 साल हो गए। बट ये जब गजट दिया गया था तो उस समय ये अप्रोच इसलिए दी गई कि आप उसको स्टेबिलिटी कर पाएँ जो प्रोडक्ट उस वर्ज पे थे जिनका लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म होने वाली है। देखिए, एक्सपोर्ट की तो गाइडलाइंस ही अलग है। एक्सपोर्ट की गाइडलाइंस क्या है, जो एक्सपोर्टिंग कंट्री मानती है। ठीक है ना, अगर वो उसमें आपसे ज़्यादा कुछ स्ट्रिक्ट मांगती है तो आपको वो कंप्लाई करना है। जो हमारा डीएनसी एक्ट है या जो हमारी गाइडलाइंस है वो स्टेट, मतलब अपने स्टेट के लिए, अपने इंडिया के लिए। कंटेनर पैकेजिंग सिस्टम के लिए बात हमने कर ही ली है। स्टोरेज कंडीशन क्या बताई है, 40 डिग्री का टेम्परेचर ±2 एक्सीलरेटेड के लिए, और लॉन्ग टर्म या रियल टाइम के लिए 30 डिग्री, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75% और 60%। मिनिमम ड्यूरेशन करेंगे एक्सटेंडेड में 6 मंथ और लॉन्ग टर्म में 12 मंथ मिनिमम। टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी अगर लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो पहले 6 मंथ्स में करेंगे 1 साल के लिए, फिर सेकेंड ईयर और एनुअली 6 मंथ्स पे, और एक्सीलरेटेड के लिए 0, 3 या 6 मंथ। इवेल्यूशन कैसे करेंगे, अगर उसके अंदर ±20% इनिशियल ऐसे वैल्यू का वेरिएशन हो गया जिस स्टेज पे प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, अगर उसको हमने कोई एनालिटिकल मार्कर के बिहाफ पे एनालिसिस किया है। कोई एक्टिव कंपाउंड के लिए ±15% का वेरिएशन इज परमिटेड। अपीयरेंस ऑफ द न्यू टीएलसी स्पॉट और डिसअपीयरेंस ऑफ द प्रीवियस वन। कोई नया स्पॉट अपीयर हो जाए या पुराना स्पॉट डिसअपीयर हो जाए। फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स के अंदर 3 पैरामीटर, मॉइस्चर, ऐश और पार्टिकल साइज के अंदर बियॉन्ड 25% ऑफ इनिशियल वैल्यू। फेलियर टू मीट द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एज पर इंडिविजुअल मोनोग्राफ और स्पेसिफिकेशन। फेलियर टू मीट द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मीन्स बाकी सब कुछ ठीक है बट वो देखने में ही खराब हो गई, जैसे टैबलेट्स हैं वो क्रैक हो गई, सिरप जो ऐसे फेस सेपरेशन हो गया, कलर खराब हो गया, पैकेजिंग खराब हो गई, तो हाँ, तो वो जो है प्रोडक्ट आपका फेल हो गया। पैरामीटर्स कौन से असेसमेंट करेंगे, एक तो होगा डोसेज फॉर्म वाइज, जैसे च्यवनप्राश बनाएंगे, कोई अवले बनाएंगे तो उसमें उसके अकॉर्डिंगली पैरामीटर्स लेंगे। जैसे आशा लिस्ट बनाएंगे तो मेन फोकस आपका रहेगा एल्कोहल एल्कोहल परसेंटेज पे, मिथेनॉल एब्सेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप तेल बना रहे हो, तेल के अंदर आपने केवल स्पेसिफिक ग्रेविटी कर दी, स्पेसिफिकेशन बन गया, नहीं, पूरा लेना है ना। उसके अंदर जैसे तेल है तो एसिड वैल्यू से कोनिफिकेशन वैल्यू, ये इन चीज़ों पर फोकस करना है। आसावरिष्ठा प्रिपरेशन है तो एल्कोहल कंटेंट पे फोकस करना है, मिथेनॉल कंटेंट पे। रूटीन टेस्ट जो डोसेज फॉर्म वाइज एपीआई में दिए हुए हैं, प्रोडक्ट में भी हो सकता है कि एपीआई में ना आया हो, बट डोसेज फॉर्म के पैरामीटर्स लगभग कवर हो गए। अगर नहीं भी कवर हुए तो आपको अपना जनरल कंसेप्ट लगाना करना है सर। अफ्लाटॉक्सिन, पेस्टिसाइड, हैवी मेटल, ये आप एक ही बार कर सकते हैं, ये एक ही बार कर सकते हैं, या लास्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि बार में तो कोई डालेगा नहीं, हैवी मेटल को बीच में डालेगा नहीं, पेस्टिसाइड बीच में कोई डालेगा नहीं, और अफ्लाटॉक्सिन्स को आप चाहें तो बीच बीच में इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं कोई इंटरेक्शन होने से उसमें माइक्रोवेव लोड तो सब करना है, हर स्टेज पे करना है। हाँ, वो तो डिटोरेट हो जाता है ना, ठीक है ना। और
ऑब्जर्वेशन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल बीच बीच में करते रहेंगे कि कलर चेंज तो नहीं हो रहा, बॉटल का डी शेप तो नहीं हो रहा, डी शेप तो नहीं हो रही है, पैकेजिंग जो है स्ट्रिप खराब तो नहीं हो रही है। ये कई बार जो टैबलेट्स होती हैं वो स्टिक करने लग जाती हैं, सॉफ्ट जेल कैप्सूल जो होते हैं वो स्ट्रिप से स्टिक करने लग जाते हैं। ऐसा तो कोई इशू नहीं आ रहा है। तो क्योंकि आपने क्या करा, प्रिजर्वेटिव ढंग से नहीं बनाया, सिरप ढंग से नहीं बनाया, पहले ठंडा नहीं करा। हाँ वाटर भी है। देखिए जितना भी बॉटल फूल रही है उसका मतलब उसके अंदर फर्मेंटेशन हो गया। उसका आपने जो सिरप बनाना था उसका इन्वर्जन प्रॉपरली नहीं हुआ। एक बार इन्वर्जन हो गया फिर आपका सिरप कहीं नहीं जाएगा, बट आपने इन्वर्जन प्रॉपरली नहीं करा, या उसके अंदर प्रिजर्वेटिव प्रॉपरली नहीं मिलाया, या कोई जो आपने ऐसा प्रोसेस करा कि बाद में उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो गया, उन्होंने फर्मेंटेशन स्टार्ट कर दिया। एसओपी क्या होगा, पैरामीटर्स को करने के लिए जो एज पर फार्माकोपी है। अगर यूनानी है तो यूनानी, आयुर्वेदा तो यूनानी, सिद्धा है तो सिद्धा। अगर वो टेस्टिंग मेथड वो वाला अवेलेबल नहीं है तो स्टैंडर्ड बुक से। ठीक है। और होम्योपैथी के लिए एक ही लाइन है अभी तक तो, नॉट बियॉन्ड 60 मंथ। ठीक है, थैंक यू। टेस्टिंग तो कर सकते हैं, यू कैन टेस्ट, बट नॉट बियॉन्ड 60 मंथ। अभी मैंडेट नहीं है। मेन इक्विपमेंट सबसे पहले स्टेबिलिटी चैम्बर है ना, स्टेबिलिटी चैम्बर। नहीं स्टेबिलिटी चैम्बर तो, स्टेबिलिटी चैम्बर आपके पास जो होना चाहिए वो CFR 21 गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके अंदर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का कंट्रोल जो होता है वो मिनिमल होता है। बाकी टेस्ट मेथड तो वही है जो जैसे आप रूटीनली लैब में अपने करते हैं। मेन तो कमर्शियल जो होता है उसके लिए है, फ्रूटफुल की स्टेबिलिटी उसको करनी है। So, excuse me, for sending the medicine to the lab for testing, I mean, how we should pack it Sending the drug to the to the lab, lab? to Yeah, the lab. because we have to collect it from PHC, CHC, you know, so even from the private chamber also, we have to collect it. But for sending to lab for proper packaging, because we can just It fill should be packed in a proper condition and as per the label prescribed. Suppose label mentioned that you should store the tablet or medicine in a cold chain, in a temperature below 20, below 30. Suppose, then you have to preserve the sample in that condition. Yeah, that's true. But Because collecting it from sometimes, there, sometimes, they will not maintain the Ah. temperature. No, yes, yes, yes. only maintaining it only when it comes to us. So that no use, no? Yes. Sometimes क्या होता है जब जैसे आपने पैक किया कि whenever the drug inspector pick up the sample and send for the analysis, it may take 2 months, 1 month, and it exposed temperature more than 40-degree temperature. It may deteriorate. Yeah, that's true. But minimum, I mean, after how many days after collecting the samples, send it to the lab? And it to the As soon as possible, I think. And yeah, I it's think okay. And then proper, I mean, packaging. in a proper packaging, I mean, how to do it? Just to keep in a packing box, that will be enough. I think tomorrow's lecture will cover this topic. drug Okay. analyst में थोड़ा सा, I think Tomorrow's doctor, lecture, Because नहीं, I doctor- think we I need think to do doctor- proper format also, you know, because we are हाँ. just making it by ourselves according to our tomorrow understanding. one lecture from Dr. Vijayakar. Vijay. If He, वो actual में Okay, okay. excuse me, sir, is there any formula for calculating the shelf life for a patent or proprietary Ayurvedic medicines? Formula. Formula. To identify, classical medicine is given in the schedule. Then cosmetic and you have to prepare the chart, na, comparative chart.
that your pH value, initial value is so and up to this group. तो 25% का जो 3-4 पैरामीटर्स पे दिया है वो वेरिएशन नहीं होना चाहिए, टीएलसी पैरामीटर्स में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, फिजिकल एट्रीब्यूट्स में उसमें कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। जहाँ पे वो शुरू हो जाएगा उससे बियॉन्ड आप नहीं दे सकते। नहीं करते ना, वही होता है। एक्सीलरेटेड शुड नॉट बी कंडक्टेड बियॉन्ड 6 रियल टाइम तो रियल टाइम। 6 महीने मैक्सिमम, क्योंकि उसमें टेम्परेचर कितना डिग्री जा रहा है 10 डिग्री, और ईच एवरी 1 डिग्री टेम्परेचर पे हम जो मानते हैं ना, मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर में हम मान के चलते हैं उसमें डिटोरिएशन इज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स फास्ट, मतलब एक रफली कैलकुलेशन है कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स फास्टर है। तो 6 मंथ्स में उसमें जितना डिटोरिएशन होना है वो ऑलमोस्ट हो जाए। वो एक रफली आइडिया देने के लिए होता है इंडस्ट्रीज को कि पता चले वो 2 साल के बाद सैंपल को दोबारा लगाए, इम्प्रूव करे। 6 मंथ्स में इसको आइडिया मिल जाएगा कि मेरा प्रोडक्ट स्टेबल नहीं। In the same line you can conduct the self line. In the same recently it is not mandatory, but suppose you picked up the ashwagandha and packed it and sold it, then it is a finished product. So in the same line you can conduct a shelf. You can pick up the sample from 6 months sample one after 6 months for the real time, for accelerated 3 times. So you can get the assessment that this product or this herbal product get deteriorated within this span of period. So we have to use before this period of time. But you don't know when the product was harvesting, collected, stored, but at least from entering your premises. At least from entering your premises. क्योंकि entirely चेंज है। अदरवाइज क्या होगा सर, आप कभी मेडिसिन नहीं बना, कभी नहीं बना। अगर सपोज 1 साल भी बचा हुआ, जैसे हर्बल ड्रग्स का रॉ मटेरियल तो सपोज 1 ईयर है, सिरप का तो 3 ईयर है, फिर सर तब भी तो आपने एक्स्ट्रापोलेट किया ना। अलग अलग पार्ट का अलग अलग शेल्फ लाइफ दिया हुआ है application में। हाँ, हमारे में तो है। हमारे में भी है। लीव्स है तो इतने दिन चलेगा, रूट है तो रूट का कितने टाइम होगा, फ्लावर का कब होगा, कब उसकी पेंट है जब तक वैलिड है, खुशबू खत्म होगा, तो इस सेक्टर के लिटरेचर में मेंशन है। Yes, sir, thank you. Now, sir will also join us in the canteen in our lunch. So you can also discuss your queries that time. Now we will proceed for the lunch, and after lunch, 2:15, we will proceed for the industry visit.